नो सर, घर पे हूँ। मोबाइल से क्यों लॉगिन किया हुआ है? सर लैपटॉप का एक्चुअली प्रॉब्लम है, उसमें माइक ऑन नहीं होता है। लैपटॉप में माइक ऑन नहीं होता है। यस सर। मैं यूजुअली डिस्करेज करता हूँ लैपटॉप से, मोबाइल फोन से क्लास अटेंड करना। सो आई नो ठीक सर। करा लेना, शुरू के 1-2 क्लास में तो फिर भी अलाउ करूंगा। अगर ये कंटिन्यू करता है तो आई वोंट लाइक दिस। ओके। ओके सर। वंदन, यस वंदन सर। कौन है? तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? सर एक्चुअली पीसी में प्रॉब्लम है थोड़ा, तो वो बीच बीच में बंद हो जा रहा था। तो अभी तो बोला था कि कैंपस में बुलाएंगे, तो वो ठीक नहीं करवा, लेकिन अभी करवाना पड़ेगा। सब नहीं, वेबएक्स सब कब डिलीट कब कर दिया था बोला सर, था? लेकिन तुम्हारे अब बैच को तो नहीं बोला था कि बुलाएंगे? तुम्हारे हाँ सर, बैच को तो लेकिन कभी। सबसे पहले तो बोला था ना कि सबको हाँ बुलाएंगे, उसके हाँ बाद सर, आया कि हमारे। पहले मेल में बोला था कि बुलाएंगे। अच्छा, दैट इज ऑल्सो नॉट अ बैड आइडिया। 2020 बैच से कौन लोग हो तुम लोग एसबीजी में? मी। मी का नाम क्या है? आदित्य आदित्य। आदित्य। एनीबडी एल्स? सर मैं देव यादव। क्या नाम है? डेविड? देव देव। देव। आईडी? 20 आईडी? हाँ, नहीं, लास्ट 3 डिजिट बताओ। ओके 016। और आदित्य का क्या है आईडी? सर 402। 402। और लास्ट क्लास में एक कोई गर्ल वॉइस था जो बोल रही थी। एनीबडी फ्रॉम गर्ल हु इज ऑन एसबीजी? सर मी अदिति। अदिति। हाँ, आईडी क्या है अदिति? 259। अच्छा, तुम वो अदिति हो जो जिसके साथ हम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। हाँ सर। So my suggestion to these people who are representing on SBG, you put forward your request कि जिन लोगों को रिसोर्स की कमी है अपने घर पे, उनको तो कैंपस आने दें। So resource say, I mean to say that who have very low bandwidth, who have very poor connectivity, who don't have any dedicated room or place in their house for attending classes regularly, who don't have a good computer system, इस तरीके की चीज जिनके पास, who are deprived of such facility, they must be, not should be, they must be allowed to come to the campus. So campus आने का criteria besides both vaccination must also be these factors of resources. Or institute should not deny your right to come to the campus on these grounds. ठीक है? I will speak with SPG convener today for this point. But I will suggest, मैंने तीनों का आईडी नोट कर लिया है, आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि you also collectively approach SBG convener or SBG academic committee to listen to your demand. Yes sir, sure. Okay. श्योर सर।
because this is a big problem which administration has been ignoring since 2 years. इवन हम लोगों को दिक्कत है. अब अभी अगर मैं क्लास में कुछ लिख के बताना चाहता हूं तो आई कैनॉट डू इट फ्रॉम माय हाउस, सो आई डोंट हैव टैबलेट. अगर मैं तो लकी हूं कि मेरे घर से मेरे बच्चे नहीं कर रहे हैं क्लासेस. अदरवाइज अगर घर से मेरे बच्चे भी क्लास अटेंड करें और अगर मेरी वाइफ भी जॉब करती तो सेम बैंडविड्थ 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता. और देन इट विल बी अ पेनफुल एक्सरसाइज टू अटेंड क्लासेस और टू कंडक्ट क्लासेस फ्रॉम हाउस, जो मेरे बहुत सारे कलीग फेस कर रहे हैं कि बच्चे छोटे हैं, कि वाइफ जॉब करती हैं, तो सेम टाइम में 4 डिवाइस होना फॉर अटेंडिंग क्लास इज ऑल्सो अ टफ टास्क, नॉट ओनली द बैंडविड्थ. 4 डिवाइस में हमेशा कैमरा आपका प्रॉपर्ली फंक्शनिंग होना चाहिए, माइक आपका प्रॉपर्ली फंक्शनिंग होना चाहिए. सो इट इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. कैंपस में रहोगे तो ये तो नहीं होगा ना. हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम तो है ही इशू. नेटवर्क प्रॉब्लम इज अ मेजर इशू. ठीक है, मैं अहमदाबाद में बैठा हुआ हूँ या जो तुम्हारे सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं वो गांधीनगर कैंपस में हैं जहाँ पे हाई स्पीड कनेक्टिविटी इज टेकन फॉर ग्रांटेड. बट बहुत लोगों के घर पे तो नहीं है उतनी अच्छी कनेक्टिविटी. So you keep demanding on these grounds and don't give up just by one mail कि नहीं साहब हम आपको नहीं आने देंगे. You keep pressing your request. Yes, sir. Okay. अब कितने बच्चे आए? So there are 274. अभी भी बहुत कम हुए हो. अभी भी करीब उसको लगता है 20% तो एटलीस्ट बचे हुए हैं. अच्छा चलो, तब थोड़ा टाइम ऑल्सो लिमिटेड एक्सेस टू रीडिंग मटेरियल लाइक रेफरेंस बुक्स. Hello, sir. हाँ बोलो. Sir, I am working on a project. If I want to collect data from some website via API. So सुनो it सुनो, requires high bandwidth. राजदेव बोल रहे हो? हाँ. क्या नाम है तुम्हारा? भव्य. भव्य. राजदेव क्या है तुम्हारे फादर का नाम है? सरनेम है. हाँ, तो भव्य, if this is your personal query then either send me a mail or talk to me separately. अगर एक कलेक्टिव कोई इशू है या क्लास रिलेटेड मैटर है, कोर्स रिलेटेड मैटर है, then you ask here, then you use this platform for that. Okay. It could be a collective issue, but there is too much background noise, so I will talk to you. बोलो फिर बोलो. Yeah, so sir, I want to request करने की कैंपस पे आने के लिए मुझे हाई बैंडविड्थ चाहिए मेरे प्रोजेक्ट के. अच्छा, हाई बैंडविड्थ चाहिए इसके लिए तुमको, because you are doing one project. Yes, sir. Yes. And that project is curriculum required project और नहीं, तो उसके लिए तो डिमांड नहीं कर सकते ना. अब कोई बोलेगा कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ इसलिए मुझको कैंपस आने दो क्योंकि वहां से मैं कस्टमर को अच्छे से डील कर सकता हूँ, तो वो तो रिक्वायरमेंट नहीं. दैट यू कैन नॉट डिमांड. हाँ, करिकुलम में मैंने मान लो कोई प्रोजेक्ट दिया है, जैसे अभी एक लड़के ने कहीं मैं देखा चैट पे शायद लिखा है कि यू आर डिप्राइव्ड ऑफ गुड रीडिंग मटेरियल. दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि आपने साहब मुझको टर्म पेपर लिखने दिया है और घर पे रह के विकिपीडिया और गूगल सर्च के अलावे मेरे पास और कोई मटेरियल नहीं है जिससे आई कैन प्रोड्यूस अ गुड वर्क. सो आई शुड बी अलाउड
to be on the campus. So उस तरीके से सोचना पड़ेगा. पर्सनल काम के लिए आप उतना डिमांड नहीं कर सकते. एनीवे सो चलो थोड़ा टाइम और मैं लगाता हूँ. सो हैव यू थॉट थ्रू हाउ शुड वी ग्रेड, और हाउ शुड नॉट वी, हाउ शुड आई grade you during this semester? Because ultimately that is what going to matter. जिसके लिए तुम लोग दिन रात कैसे चोरी करो और कैसे सिस्टम को ब्लफ दो, वो सब करते रहते हो. उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं कह रहा हूं कि जिसमें you also remain honest and you also focus on learning only rather than how to get a good grade. तो कुछ सोचा पिछले क्लास में जो मैंने बताया था उसके बेसिस पे? So let me share ऑप्शन एंड वीडियो के लिए अभी कर देता हूँ, ठीक है? एंड लेट मी शेयर माय स्लाइड एंड लेट मी. अच्छा, हैव यू रिसीव्ड माय इसको तो बंद कर दिया जाए. Have you received my request for joining Moodle? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Yes, Join sir. किया कुछ लोगों ने या नहीं किया? Yes, yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Did you face any problem in joining that? No, sir. No. Sir, No, sir. हाँ, क्या कोई कुछ बोल रहा था? Did you face any problem? No, sir. Sir. So I am starting recording and I am stopping my video. Okay. So here on the first slide, I have put your, so there are two WebEx links which will remain for good during the semester, one for Tuesday and one for Thursday. Because the timings are different, therefore I have to create two links of WebEx. Can you tell me, can anybody tell me, even if I have not started the session, you joined the session. So I know of the WebEx system that unless the host starts, nobody can join. But for last 2 days, I am facing this that even if I have not started the session, you have joined. How it is possible? Sir, actually, you have to end the session while leaving on the when you click the red button. There will be two options: leave meeting and end the session. You will have to end the session. Then only. Then you cannot join without my starting the session, right? Yes, sir. Yes, sir. So it might have happened that in Tuesday class I did not end the session. Yes, sir. You only left the session. I just left the session. चलो वो भी टेस्ट करके देख लेंगे. ओके, सो अब हम लोग जरा बात करें ऑफ. So last class I told you that I just introduced you to one TA, Janvi, but in this last 48 hours, these three new TAs are also assigned to this course. So we have 4 TAs, Janvi, Krunal, Jui and Vyom. Of these 4, Krunal is from MTech final semester and the remaining 3 are from MTech second semester. Unfortunately, all 4 of them are of software system specialization. तो मोस्टली इनका काम मतलब ज़्यादा ये टेक्निकल असिस्टेंट तो नहीं दे पाएंगे हम लोगों को.
because of their lacking in their background. But let us see, at least these 4 are the primary point of contact for you. However, I insist again that don't ever hesitate in writing to me. I love to talk to you. I love to interact with you. I love to answer your queries whenever you require, whether it is course related, कुछ भी हो, अगर मुझको लिखोगे, I will certainly there to help you or stand for you. Right. So these are the 4 TAs which I wanted to introduce to you formally. अब आते हैं जो हमारी जो पॉलिसी जो पिछले क्लास में हमने आपसे कहा था, इसमें डू यू सजेस्ट एनी चेंज? Yes, sir. Sir, no assignment. You want no assignment? Yes, sir. May I ask reason why? मैंने अपना रीजन बताया था कि मैं असाइनमेंट देने से क्यों हेजिटेट कर रहा हूँ, बिकॉज इट विल बी टू मच ऑन मी. इवैल्यूएशन विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर मी, और अगर मैं इवैल्यूएट नहीं कर पाऊंगा ठीक से, तो असाइनमेंट जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस अगर मैं देता हूं तो उसमें यू विल नॉट पुट मच एफर्ट इन दैट, एंड देयरफॉर दिस असाइनमेंट वाज नॉट अ गुड पैरामीटर फॉर ग्रेडिंग. But may I know why you are saying that I should not give you assignment? Sir, it will help us to focus on the term paper. Like we will have one focus. अगर assignment आ गया तो उसमें थोड़ा ध्यान मतलब बीच में उधर time देना पड़ेगा. Okay, okay, okay. Any other remark, suggestion, comment? नहीं? What about you? Sorry, कोई कुछ बोल रहा था. I agree with him. नहीं, मैं कुछ नए कमेंट्स मांग रहा हूँ, वोटिंग नहीं करा रहा हूँ. So is there any other comment or suggestion? कोई पैरामीटर ऐड करना चाहते हो, कोई पैरामीटर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, किसकी का वेटेज ज्यादा या कम करना चाहते हो? सर ऐसा तो होता है सर मतलब असाइनमेंट का मतलब टर्म पेपर का थोड़ा कम कर और एग्जाम्स का मतलब एग्जाम्स और असाइनमेंट्स में थोड़ा ज्यादा कर लें. हाँ सर, असाइनमेंट्स भी रखो ना, क्योंकि if we fail to perform well in one of the exams, so like if there are assignments, we might have covered our marks there. Like there is also a famous saying, you should not invest all your eggs in one basket. So हाँ सर, sorry, what is that saying? You should not invest all your eggs in keep all your eggs in one basket, like the famous stock market one. Right. So I insist on keeping assignment. You can't insist, you can request. Right. So you should say that I request you not keep assignment. Okay. So assignment के फेवर में भी लोग हैं, assignment के अगेंस्ट में भी लोग हैं. Any other suggestion? Sir, assignments can be optional. Like if you do the assignment, you get extra credits. Otherwise, it is optional. People can do it if they want, and they cannot do it if they don't. और अगर मैं ऑप्शनल रखूंगा तो किस कंडीशन में तुम उसको ऑप्ट करोगे? As in, if you do the assignment, you get extra credit. So the people who want extra credit can do the assignment. एक्स्ट्रा क्रेडिट का क्या मतलब? मतलब like थोड़े extra marks दे देंगे. एक प्री डिसाइडेड अमाउंट ऐसे रख देंगे. वो तो असाइनमेंट रखने जैसा ही हो गया ना. हाँ तो सब करेंगे ही ना, सबको मार्क्स चाहिए. क्योंकि हाँ सही में अगर ये आउट ऑफ 100 रहेगा तो सब करेंगे, और अगर ओवर एंड अबव 100 रहेगा तो
वो तो कोई मीनिंग नहीं रहा फिर तो। Sir, हम्म if we transfer the weightage of assignment to the term paper, then I think we have 4 options to perform. Right. So Yeah. there will not be issue. Like we have quizzes and 35% of 25% of term paper, and then mid-sem and end sem. So I think that will be fine. हाँ, मुझको भी तो वही लग रहा है कि देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स, सो इवन इफ यू डोंट परफॉर्म गुड इन वन ऑफ द कंपोनेंट्स, तो भी यू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी एंड टाइम टू मेक इट अप इन फॉर्म ऑफ अदर 3 कंपोनेंट्स। देखो, खराब ग्रेड तो उसी को आएगा ना जो चारों कंपोनेंट में खराब करेंगे। Hello, Otherwise, sir. हाँ बोलो। Sir, So like, when we go have on. quiz of 10% and mid-sem of 25. क्यों? सर वो क्विज में इतना प्रिपेयर नहीं होते हैं ना, वो अचानक हो जाते हैं। क्विज तो प्रिपेयर होने के लिए है ही नहीं। क्विज इज इम्प्रॉम्प्टू एग्जाम। सो उस क्लास में, जैसे मान लो मैं इस क्लास में कुछ पढ़ाऊंगा, तो जस्ट आई वांट टू चेक वेदर यू वेर फोकस्ड और नॉट, वेयर यू वेर अटेंटिव इन द क्लास और नॉट। तो आज के क्लास में जो मैं पढ़ा हूं ना, वही पूछूंगा मैं क्विज में। मैं क्विज में एग्जाम नहीं, मतलब क्विज में 4 क्लास पहले मैंने क्या पढ़ाया था वो नहीं पूछूंगा। So there is no point in suspecting that if you are not prepared, you will perform bad in the quiz. The only reason why you could not perform good in the quiz is you are not focused or attentive in the class on that particular day. Sir, can we Sir. implement 15% and quiz 10%? What 50%? Assignment. And Assignment the quiz to 15% 10%. and quiz 10%. Hello, Any sir. other suggestion? Can Yes, we bolo. transfer assignment weightage to the mid-sem examination? Assignment to mid-sem exam. Yes, sir. सर और पोल ही कौन रख बोल- दो ना अभी क्लास में, वो मैं इससे कि किसको असाइनमेंट चाहिए नहीं चाहिए, बिकॉज़ देयर मेनी पीपल हु आर सेइंग दे वांट असाइनमेंट, देयर आर मेनी हु आर सेइंग वी डोंट वांट असाइनमेंट। सो सो क्या यू कर कैन दूं? जस्ट डू पोल द करा दूं? पोल। पोल हाँ, करा पोल दूं? कर दीजिए कि असाइनमेंट चाहिए क्या। नहीं, पोल नहीं करूंगा। पोल नहीं करूंगा। आई जस्ट वांट टू कलेक्ट आइडियाज। डिसीजन तो मेरा होगा। मैं इतना ऑल्सो डेमोक्रेटिक सर, आदमी नहीं टर्म हूं। पेपर विल इट बी इंडिविजुअल और ग्रुप में? It will be individual, but it might happen that multiple students may get the same topic of term paper. Hello, sir. But it has to be individual. आप लोग आपस में भी कॉपी कीजिएगा तो 0 नंबर दूंगा। ओके? Hello, sir. ये नहीं आप कह सकते हैं, छेड़ो अभी, ये नहीं कह सकते हैं कि साहब टॉपिक तो सेम था तो चीज तो रिपीट हो ही जाएगी। 0 दूंगा, सीधे 0 इफ आई फाइंड कॉपिंग अमंग ईच अदर। हाँ बोलो। हेलो सर, कौन कह रहे थे? Sir, NSEM exam 50%, mid-sem exam 25, term paper 15 and quiz 10. अच्छा, सो किसी कारण से अगर एंड सेम आपका खराब हो गया तो यू आर कंप्लीटली गॉन। तुम अपने फेवर में अपने अपने क्लास के फेवर में सोचो ना यार। यानी मतलब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। देखो कितनी बार ऐसा होता है कि किसी कारण से एंड सेम एग्जाम का वेटेज इसलिए मैं ज्यादा नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं रखना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन। नोबडी नोज who will be facing what situation at the end of the semester. सर क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिन गूगल फॉर्म जनरेट कर दो, जिनको असाइनमेंट चाहिए वो फॉर्म भर दे। नहीं ऐसा नहीं कर सकते, मैं बता चुका। हाँ
सर क्विज थोड़ी एक्स्ट्रा रख सकते हैं क्या? मतलब अगर 3 लेने वाले तो 4 रखो, तो कभी नेटवर्क इशू हुआ तो बेस्ट ऑफ 3 करके ऐसे काउंट कर सकते हैं। अभी केवल हम बात कर रहे हैं क्विज का वेटेज कितना होना चाहिए, या क्विज रखना है या नहीं रखना है। अभी केवल उसकी बात कर रहे हैं। क्विज में कैसे कंडक्ट करूंगा, दैट इज अप टू मी। सर क्विज में प्रॉब्लम आता है ये कि वो बाद कभी कभी क्या होता है कि वो कंडक्ट नहीं कर पाता है स्टूडेंट अपने इनसे, तो वो खत्म हाँ, हो आई जाता नो, क्योंकि मैं क्विज कंडक्ट तो करता हूँ और तुम क्विज देते हो, so yes, sir. I am also involved in that, so I also have knowledge and I also know the problem faced during quiz. ठीक है, तो Yes, sir. वो मेरे पे छोड़ो, ट्रस्ट ऑन मी. I will be the last person to be unfair to you, to my students, to my class. बट कभी कभी कुछ डिसीजन तो लेने पड़ते हैं ना. ऐसा नहीं है कि फेयर होने के चक्कर में मैं लीनियंसी दिखाऊंगा, वो नहीं है, क्योंकि दूसरों के लिए अनफेयर फिर हो जाएगा. But all said and done, I will try to adjust everything so that you should not face any issue because of your individual situation. Definitely, sir. Sir, can I give a suggestion for quiz? Yes, why not? सर क्विज क्लास के बाद, मतलब खत्म होने के बाद अगर रखेंगे तो वो हमारे लिए बेटर होगा सर. क्यों? इन बिटवीन क्लास सर वो लिंक आता है, फिर वो लिंक वर्क नहीं करता, खुलता नहीं है, फिर टाइम बाउंडेशन होता है, टाइम खत्म हो जाता है क्विज का. तो इसीलिए क्लास खत्म होने के बाद अगर क्विज रखेंगे तो मूडल पे या फिर कहीं पे भी, तो इट विल बी गुड फॉर अस. अच्छा, मुझको ट्रैप तो नहीं कर रहे हो? नो नो सर, आप पूछ लो किसी से भी. इन बिटवीन क्लास नहीं, लिंक ट्रैप आती है से मैं तो ये वो मीन कर रहा हूँ कि अगर मैं अनाउंस कर दूं ना कि क्विज मैं क्लास के बाद ही लूंगा, तो फिर तुम लोग गैंगअप हो जाओगे, फिर तुम लोग कुछ एक ऐसा तरीका निकालोगे टू चीट द सिस्टम. उससे मुझको थोड़ी सी घबराहट होती है. मतलब आई एम पिस्ड ऑफ तो इफ सर आई वो सी तो इन दैट. बिटवीन था. नहीं, इन बिटवीन में तो नहीं कर पाओगे. इन बिटवीन में प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस देन. अब देखो, एक प्लान्ड क्राइम और एक एक जस्ट ऑन द स्पॉट, मतलब स्पॉन्टेनियस, नॉट ऑन द स्पॉट, स्पॉन्टेनियस क्राइम, इन दोनों में फर्क है. अचानक मुझको गुस्सा आया और मैं तुमको एक घूसा मारा और तुम्हारा दांत टूट गया, दैट इज डिफरेंट थिंग. और मैं बेसबॉल बैट लेके गया and I hit on your knees and I broke your bone, that is different thing. दोनों कानून के इसमें अलग अलग तरीके से देखे जाएंगे. सो क्विज कैसे करूंगा, दैट लीव इट ऑन मी. अगर लिंक तुम्हारा नहीं खुलता है तो देखेंगे क्या किया जाए. जैसे अभी भी तो मिड सेम एग्जाम और एंड सेम एग्जाम में भी तो तुम लोग क्वेश्चन नहीं बनता है, तुम सेशन लीव कर देते हो और उसके बाद बोलते हो कि साहब हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम था, आई सडनली गॉट ड्रॉप्ड, मेरा लैपटॉप क्रैश कर गया, तो मेरा री एग्जाम ले लीजिए. कहते हो कि नहीं कहते? ऐसा थोड़ी है कि सारे री एग्जाम के केस आर जेन्युइन री एग्जाम केसेस. नो, इम्पॉसिबल. बट हम लोग क्या करें, लेना पड़ता है. बेनिफिट ऑफ डाउट सर. हाँ, तो बेनिफिट ऑफ डाउट. अगर क्विज में भी लिंक नहीं खुलेगा, दिस इज द सेम सिचुएशन व्हिच आई हैव टू एड्रेस. पर सर ये एक प्रॉब्लम है जो फेस करना पड़ता है. पिछले सेमेस्टर में भी ईडब्ल्यूडी के सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं हुआ था. तो मेरे कोर्स में? हाँ सर, आप ही के कोर्स में. व्हाट वाज दैट लाइक? लाइक सर 2 क्विजेस आई कुडंट पार्टिसिपेट बिकॉज़ वो लिंक ही नहीं खुला था. और you informed me and still I did not yes sir, address that. yes sir, I informed you, but उसके You बाद informed me or you informed my TAs? both of you sir. I have CC you also, but it might अच्छा, be I'm sorry you for might that. be. I'm sorry for Yeah. that, but actually
मैं इन सब चीज में बड़ा पर्टर्ब हो जाता हूँ when somebody blames me I did not pay attention to the request. So in retrospect I am sorry. No, यूजुअली that's मैं okay. ऐसा करता नहीं। यूजुअली मैं सारे रिक्वेस्ट देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ और उस पर एक्शन लेता हूँ, बट हो सकता है छूट गया हो। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है। सो आई विल टेक दिस पॉइंट नोटेड एंड क्विज कैसे करूँगा वो मैं डिसाइड करूँगा। मैं अपने टीएस से बात करूँगा कि कैसे कंडक्ट किया जाए सो दैट मिनिमम प्रॉब्लम आए। So okay, Thank you. the last 2-3 Sir, minutes on this. Do you want any new parameter to be added? Now come straight to the. Yes, I have one suggestion. Yes, बताओ. You could add attendance criteria for. Attendance तो quiz में आ जाता है. Attendance में in principle I am against attendance. तो quiz में आ जाएगा ना अपने आप. उस दिन क्लास में नहीं आओगे, 0 आएगा. एंड क्लास आए हुए हो, अटेंटिव नहीं हो तो भी अगर 0 मार्क्स मिला है तो भी 0 आएगा. सो बोथ आर सेम फॉर मी. It is not important to make attendance to come to the class. Important is to learn. So if you are coming to the class, I expect that you are learning. You have come for learning. But अगर क्लास में आके भी तुम कंप्यूटर गेम खेलने के लिए बैठे हुए हो तो you and the person who is sleeping in his bed are same for me. So attendance तो मैं अलग से कभी even physical classes में भी मैं attendance कभी criteria नहीं रखता हूँ for grading. Last suggestion or comment. sir, am I audible? Yes. Sir, I would like to propose an idea. बोलो. Sir, assignment and quiz एक ही कर दो ना, like 15% में. So if quiz में problem हो रही है तो at the end you also have a backup क्या assignment देके cover that part and mid-sem 30% कर दो. मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आई डोंट वांट टू. देखो ग्रेडिंग पॉलिसी तो बहुत फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है ना बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट. सो उसमें मैं इतना ओपन एंडेड नहीं रहने दूंगा. बट व्हाट आई कैन सजेस्ट is that I will keep assignment as a makeup parameter. Suppose at the end, देखो सेमेस्टर एंड तक तुमको मालूम है कि तुमने टर्म पेपर में कैसा किया. However, I don't promise कि मैं टर्म पेपर का ग्रेडिंग एंड सेम एग्जाम के पहले तुमको दे सकूंगा. I don't promise that. But you know how did you perform or how good your report was. So at the end by the end of the semester, you know कि तुमने टर्म पेपर, मिड सेम एग्जाम, क्विज एटसेट्रा में कैसा किया हुआ है. So if then you opt for a makeup criteria, तो I may give you some assignment for that, but अभी मैं promise नहीं कर रहा हूँ, but I will consider. So in the next class I will conclude this. उसमें मैं बताऊंगा कि whether there will be any makeup criteria or not, and what if it is there, what is that, right? But we are going ahead with quiz, mid sem, end sem and term paper. Percentage मैं आपको अगले क्लास में फाइनल बताऊंगा. राइटो? ओके. Yes, sir. Yes. Yes. Okay, sir. चलो, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. ओके, अब हम आते हैं अपने कोर्स की बात पे. सो द नेम ऑफ द course is engineered materials. Certainly this is not the typical materials. This is about how we can manipulate with the materials to make some intended
material, right? And that is what we mean by engineering in materials. Like in the last class also, I told you that these materials are recognized or used or selected on the basis of either their structural properties or functional properties. ठीक, स्ट्रक्चरल में तुम उसका वेट, साइज, वॉल्यूम, आदित्य जोशी अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज. Everybody please check that you are muted. Thank you. So structural material की बात हम लोग इस कोर्स में नहीं करेंगे. That is out of scope. What we will talk about is the selection of material on the basis of their functional properties. And those functional properties could be their mechanical property or thermal property or optical property, electrical property, electronic property. Ab electrical and electronic properties are different type of properties. Don't miss them. Don't confuse that these are the same. Electrical में हम केवल electrical property की बात करेंगे. Electrical property means how much current will it pass, whether it is electrically conductor, insulator or what. और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी में हम उनके इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर के बेसिस पे, एनर्जी बैंड के बेसिस पे, हाउ दे आर. सो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी मोस्टली हम सेमीकंडक्टर मटेरियल से मीन करते हैं, एंड वी विल डिस्कस सम ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल अंडर द scope or theme of electronic property of as functional property of a material. And is there any chance to engineer that? Is there any chance to manipulate that? Is there any chance to create novel materials based on their electronic property or their semiconductor properties? For example, you might have heard the name of graphene. You might have heard the name of material carbon nanotube. Now, the carbon nanotube is a different type of material than graphene, because in carbon nanotube, we also manipulate the mechanical property of the material. उसमें हम strength की भी बात करते हैं. Strength per unit volume या strength per unit strength versus weight of the material, उसकी भी बात करते हैं. And we compare it, carbon nanotube CNT, we compare it with steel. And can it be possible? Yes, wrong या wrong, क्या नाम था? कुछ पूछना है? यार अपने आप को सारे लोग म्यूट करके रखो प्लीज. I don't deny the fact that you have something going on in your background. But please मुझको उससे insulated रखो. Because this disturbs the class. And this disturbs me. Please. And graphene has is a different material, जिसमें हम केवल उसके electronic property की बात करते हैं. Graphene is we call it a semi-metal. It is neither a metal nor a semiconductor. Graphene does not have any band gap. Graphene के केस में जो valence band और जो उसका conduction band है, those two bands meet on a point. They are not separated. There is no band gap between these two bands where electrons exist or where electrons may exist. ये दोनों टच करते हैं. अब टच करने के केस में
तो हम इसको मेटल कह पाते हैं, ना हम इसको इंसुलेटर कह पाते हैं, ना हम इसको सेमीकंडक्टर कह पाते हैं. But there are ways by which we can create a band gap in this material to induce or to engineer a semiconductor property in graphene. These are some of the functional properties on which basis we are going to distinguish or select or reject some of the materials. So can you think of some more examples like I gave you just now? Not only think, can you tell me some of more example जिसमें तुम ये बता सको कि functional properties के कारण, so this is where optical property, so optical property का कोई example दे सकते हो जिसके basis पे material को हम pick करते हैं? सर Anybody? हाँ सर ऑप्टिकल बोलो. ग्लासेस जो होते हैं, पोलराइज ग्लासेस जो होते हैं, वो एक तो जो दो परपेंडिकुलर रखे दोनों को, तो उसके बाहर वाली सरफेस पूरी डार्क हो जाती है, तो वो एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है. हाँ, so कौन से सिचुएशन में हम यूज करते हैं पोलराइज ग्लासेस? सर सन प्रूफ के लिए, आंखों को सन से बचाने के लिए, मतलब पोलराइज ग्लास, आंखों को सन रेज की इंटेंसिटी से बचाने के लिए, राइट? इंटेंसिटी के लिए. एनी अदर एग्जांपल? Hello, sir. Yes. Sir, the rubber is the rubber is vulcanized for increasing its strength to be used in rubber tires. Come again. What? Sir, the natural rubber is vulcanized with sulfur to increase its strength so that it can be used in the tires for vehicles. हाँ, so वो किस functional property में जा रहा है? The mechanical properties. Mechanical properties. Increases Okay. strength. Any example of thermal property जिसके basis पे हम? Sir. हाँ. Sir, I don't know about its exact use, but I have seen something aerogel. From what I understand, aerogel has a very high thermal resistance. So it's on its one side of an aerogel sheet. You can heat it as high as around at a very high temperatures, but on the other side we can easily touch that without burning our hands. So I don't know about it where it is used, but I have actually heard about it when I was searching about what is aerogel. 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 What is its spelling? AEROGEL. Okay. Any other example? Yes, sir. In some bells, we used strip made of two metals combined. Like, so when it expands, the bell starts ringing. Common phenomenon. So we are using thermal properties in that. Electrical bell? What type of bell? Electric bell, sir. Yeah. So electric bell starts Same type of bell ringing. that so there are like huge top metallic top, the bells that we used in schools. हाँ. सर ठहरो इसकी बात मुझको पहले समझने दो. So electric bell. So not specifically electric bell. I don't remember what they were called. So they had a metal, like on one side there was copper and other side there was another metal, and one metal expanded more compared to others, that so that whole rod bent and the bell start ringing. Okay. The name for this thing is bimetallic strip. Bimetallic strip. Bimetallic strip. Yeah. So how many of you have ever observed closely how these railway tracks are formed? ट्रेन पे सफर किया है? Have you traveled by train? Yes. Yes, sir. कभी Yes, sir. ट्रेन ट्रैक्स देखा है closely?
हाँ सर, वो बीच में गैप होती है उसके अंदर। वुडन बार लगाते हैं। हाँ, हाँ, बीच में गैप होती ताकि है, राइट। तो उस गैप को किस चीज से समर में फिल करते एक्सपांड कर सके वो। हाँ, सॉरी, कम अगेन, किसकी आवाज थी ये? सर वो दो ट्रैक्स के बीच में ना गैप होती है, मतलब हाँ। छोटी सी गैप होती है, क्योंकि विंटर में और समर में वो स्टील जो होता है वो एक्सपांड करता है, इसलिए वो ज्यादा वो मतलब फैलना चाहिए, इसलिए थोड़ी गैप रखते हैं हाँ, वो, बट वो मतलब गैप उसके गैप नहीं रहता है, उसको हम फिल करके रखते हैं। दैट इज नॉट एग्जैक्टली गैप। मतलब So, ऐसा मटेरियल यूज करना होता है जिसका थर्मल एक्सपेंशन कम हो। उसको वुड का सपोर्ट देते नीचे से ताकि वो ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, वो वुड का सपोर्ट तो दूसरे कारण से, दैट इज डिफरेंट थिंग। जो ये लड़का कह रहा है ना, मैंने नाम नहीं पढ़ा उसका, विच इज व्हाट आई वांट टू कम ऑन। तो सर्टेनली मान लो यहाँ से अहमदाबाद से बॉम्बे की लाइन है, ठीक है, दैट डिस्टेंस इज अराउंड 650 किलोमीटर्स। तो 650 किलोमीटर का तो रेलवे ट्रैक बनाना इम्पॉसिबल है, मतलब सिंगल लाइन 650 किलोमीटर का बनाना इम्पॉसिबल है। So certainly those tracks or railway lines are made in pieces, and those pieces could be of let us say 50 meter or 100 meter. I don't know exactly what is the lateral dimension of those tracks. So वैसे बहुत सारे pieces को connect करके कंबाइन करके हम 600 किलोमीटर का लाइन बना रहे हैं, या बॉम्बे टू दिल्ली हो सकता है 1200 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर की लाइन बना रहे हैं। सो व्हेन अ ट्रेन in a very high speed and with heavy load passes on through that line, because of that pressure and because of the speed, it generates huge amount of heat. Huge amount of heat creates causes expansion in those railway tracks. तो वो जो आयरन का ट्रैक है वो certainly फैलेगा, एक्सपैंड करेगा। जो एक्सपैंड करेगा तो उसको एक्सपैंड करने के लिए क्या चाहिए, नहीं तो वो ट्रैक्स जो है वो मुड़ जाएंगे, वो टूट जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे। टेढ़ा हो जाएगा तो ट्रेन एक्सीडेंट होगा। सो व्हाट डिड वी डू, दैट we create some gap between two tracks, two pieces of those iron tracks. उस गैप में हमको कोई मटेरियल भरना पड़ेगा सो दैट वो कंटिन्यूम बना रहे। नहीं तो अगेन बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन वन पार्ट वो नीचे चला, जमीन में नीचे धस जाएगा, आगे वाला थोड़ा ऊपर रहेगा, तो उससे भी एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है इफ हाई स्पीड इंजन पासेस ऑन दैट। इसलिए कंटिन्यूम के लिए वी हैव टू फिल इट अप। नाउ इफ दिस मटेरियल एंड आयरन बोथ हैव सिमिलर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, वो मटेरियल भी वैसे ही फैलेगा, तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे। So the material that we select to fill up the gap between two iron rails or tracks should have the inverse thermal expansion coefficient of iron. तो आयरन का जो ट्रैक वो एक्सपैंड करेगा और ये श्रिंक करेगा, and thereby we maintain the length in the same proportion all the time. So that is a good example of thermal property or functional property, thermal property as a functional parameter for material selection. Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं. So just giving you an example of steel, its mechanical strength, normal steel, its mechanical strength is 200 megapascal. Steel को जब आप एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखेंगे, स्टील का क्रॉस सेक्शन लो, टेक द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील, you won't find anything
very explorative or very amazing. But when you put it even under an optical microscope of, let us say, 1000 magnification, then you will find that it has a molecular structure which has grains and grain boundaries. ये जो ग्रेन्स जिसको हम कहते हैं उनका अपना एक डिमेंशन होता है. Once we manipulate these grains at molecular level or micro level and make these grains smaller and smaller, तो इसी स्टील का स्ट्रेंथ will rise or may rise by 10 times. So 200 megapascal से वो 2 gigapascal हम बना सकते हैं, 2000 megapascal. So this is where engineering comes. स्टील में ही हम डिफरेंट ग्रेड्स के स्टील जब बनाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द intent of use, then it comes under engineered materials. Now you can say कि अगर 2 gigapascal का भी हो ही सकता है, 200 megapascal का भी हो सकता है, why can't we make only 2 gigapascal so that the same steel can be used everywhere? The point is cost. The moment you input engineering in some form, certainly you are adding cost to manufacturing that material. And therefore, depending upon use of the material, you have to pick and choose the materials of different grades. वही स्टील आप अपने घर के यूटेंसिल में यूज करते हैं, वही स्टील आप रेलवे लाइन के लिए यूज करते हैं, वही स्टील आप बिल्डिंग खड़े करने के लिए यूज करते हैं, वही स्टील आप एरोप्लेन की बॉडी बनाने के लिए यूज करते हैं. बट बिकॉज all 4 situations require different type of functionality, or they have to sustain or survive in different type of ambience, you have to select different properties, or you have to engineer different properties in the same steel. And that is what we are going to study in this course. Now taking another example. So pure material. आज की तारीख में प्योर मटेरियल हम बहुत कम यूज करते हैं. हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि वी कैन मेक, जिसको आप पिक एंड चूज कहते हैं ना, पिक एंड चूज का सबसे अच्छा एग्जांपल है व्हेन यू गो टू अ गारमेंट शॉप to select some shirt or trouser or dress material for you. कैसा जीन्स हमको लेना है, कैसा उस पर शर्ट लगाना है, कैसा टॉप लेना है, कैसा स्कर्ट लेना है, उस समय what goes in your mind? The thing that is circulating in your mind while seeing the fabric of the textile or color or stitching. कुंती केतान, काइंडली म्यूट योरसेल्फ. यार तुम लोगों को कितनी बार कहना पड़, ये क्या अनम्यूट अपने आप हो जाता है? If you have muted yourself, where was I? So when you are in a let us say Levi's shop or in any ready-made garment shop, तो उस समय आपके दिमाग में चलता रहता है कि इस फंक्शन के लिए मुझको ये ड्रेस चाहिए, या मुझको क्लास अटेंड करने के लिए चाहिए, और आई हैव टू गेट सम ड्रेस or some clothes for when I am in bed.
तो उसके लिए डिफरेंट फीलिंग का, टेक्सचर का आपको क्लोथ चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट फंक्शनैलिटी जिसको हम कहें या रिक्वायरमेंट हम कहें, उसके बेसिस पे आप अपने क्लोथ सेलेक्ट करते हो, राइट? So similarly, when we come to material, तो उसमें भी हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वो मिक्स एंड मैच कर सके, कि थोड़ी प्रॉपर्टी निकल की रहे, थोड़ी प्रॉपर्टी कैडमियम की रहे, थोड़ी प्रॉपर्टी टाइटेनियम की रहे, सो दैट मुझको एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल भी मिल रहा है, एक लाइट वेट मटेरियल मिल रहा है, एंड सो देयर आर thousands of combinational options that are with us when we go for engineering a material or manipulating a material. Like in colors, अगर टीवी टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, so there are only 3 fundamental colors: red, blue and green, right? But now the display technology has given us billions and billions of options of colors, जो इसी RBG से हम बना सकते हैं. Because for each RBG, the moment I digitize these colors, so for each of these 3, we have 256 options. 256 options अगर है 0 से लेके 255 तक का, and 0 is completely absence of that color, and 255 is 100% presence of best availability of that hue, that color. So अगर 256 options हैं, so you can very well calculate how many options do you have with these three colors, fundamental colors. So now you have billions and billions of options of colors when it goes for display technology. जो आपको दिखाई देता है on your mobile phone, जो आपको दिखाई देता है on your TV screen, जो आपको दिखाई देता है on your tablets, जो आपको दिखाई देता है anywhere else, which is created by us, not by nature. Still, we are very far away from what we see in nature, in natural form. नेचर का जो रेड रोज है, वो कलर ह्यूमन बीइंग सो फार कुड नॉट रिप्रोड्यूस because of some limitation that we will study in this course. So okay, so coming back to all the combinations possible using the known materials, we have created alloys and composites. So there are some lightweight alloys. Where do we require them? In avionics, let us say. ये जो एरोप्लेन का विंग्स है, उसको बनाने के लिए मुझको लाइट वेट मटेरियल चाहिए, बट एट द सेम टाइम इट्स स्ट्रेंथ हैज टू बी वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी हाई स्ट्रेंथ एंड वेरी लाइट मटेरियल. तो उसके लिए जो मटेरियल हमने बनाया, जो एलॉय हमने बनाया, दैट एलॉय इज एल्यूमिनियम टाइटेनियम कॉम्पोजिट, बिकॉज आई रिक्वायर वेरी हाई यंग्स मॉडुलस फॉर दैट मटेरियल. जो छोटे से फोर्स लगने से जो अगर कुछ डिफॉर्म होता है, इमीडिएटली इट हैज टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. On the other hand, we require very high thermal coefficient alloys in case of gas turbines, in case of nuclear power plants. ये जो गैस टर्बाइन या न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो मटेरियल है, these material are certainly of very high quality in their thermal coefficient than what you use in जो एक ब्लैक स्मिथ यूज कर रहा है. सपोज ब्लैक स्मिथ भी वही काम कर रहा है, वो भी मटेरियल को मेल्ट करता है और उससे डिफरेंट शेप के मटेरियल बनाता है, या से वो ऑर्नामेंट्स बना रहा है,
या वो ज्वेलरी बना रहा है, गोल्ड स्मिथ। बट गोल्ड स्मिथ जिस तरीके का किस तरीके का अपना एक वो थर्मल चैम्बर रखता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ। if you go to some jewelry shop with your mother or with your sister, usually आज की तारीख में तो इवन इट इज जेंडर न्यूट्रल दैट यू यूज ज्वेलरी, एवरीबडी, और इट इज जेंडर न्यूट्रल टू यूज अ ज्वेलरी। सो मान लो आपके पास कोई पुराना डिजाइन का ज्वेलरी है, मैं वेरी फ्रिक्वेंटली और ओकेजनली, नॉट फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली आई गो विथ माई डॉटर और विथ माई वाइफ टू अ ज्वेलरी शॉप। तो मैं पूछता हूँ कि क्यों हम जा रहे हैं, तो अरे ये गोल्ड रिंग जो है मेरा वो बहुत पुराने डिजाइन का है, इसको मैं नए डिजाइन में मुझको चेंज करना है। तो हम वहाँ जाते हैं ज्वेलरी शॉप में, वहाँ वो उसको वे करता है, उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसकी प्योरिटी कि कितना गोल्ड है, कितने कैरेट का, जो कैरेट टर्म आता है वो वहां से आता है, और वो उसके रिफ्लेक्टिविटी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी 100% इट इज बेस्ड ऑन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलॉय। बेसिकली वो एक एलॉय है, इट इज नॉट प्योर गोल्ड। तो वो निकाल के मुझको बताता है कि इसमें इतना % गोल्ड है आपका, मार्केट रेट के बेसिस पे वो मेरे को उसका रेट बताता है। देन आई एम सेंट टू सम अदर प्लेस इन द सेम ज्वेलरी शॉप, जहां पे उनका एक एक फायर चैम्बर होता है। उस फायर चैम्बर में उसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके उसको एक मान लो एक स्लैब के फॉर्म में बना के मुझको देता है। स्लैब क्या, क्वाइन के फॉर्म में या उससे भी छोटा, एक एक रिंग का कितना बड़ा ये बनेगा डिमेंशन। सो उसको एक सॉलिड फॉर्म में मुझको कन्वर्ट करके वो देता है। फिर मैं नीचे जाता हूँ, उसका फिर से वो वैल्यूएशन करते हैं, साहब ये 4,000 रुपये का या 40,000 रुपये के वैल्यू का है। नाउ यू कैन गो एंड सेलेक्ट एनी अदर jewelry of your choice within that range, और अगर उसका प्राइस उससे ज्यादा है तो you have to pay the over and above price for that। बट वो जो जो फायर चैम्बर है जिसमें उसने गोल्ड को मेल्ट किया, सेम फायर चैम्बर will not be used to melt iron piece। Same fire chamber will not be used for gas turbine, for nuclear power plant। सेम फायर चैम्बर कैनॉट बी यूज फॉर मेकिंग अ तंदूर। जो आप जाते हो ढाबा पे या किसी होटल में और आप ऑर्डर करते हो कि मुझको तंदूरी रोटी चाहिए, वो तंदूरी रोटी जिस तंदूर में बनता है उसमें डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन चाहिए, और इसलिए वो जो जो एनक्लोजर होता है, वो जो एनक्लोजर होता है जिसमें फायर रखते हैं और जो वो गर्म होता है जिसपे आप डब डालते ही वो कुक होता है, दैट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टी। वो सिंपल सॉइल से बन सकता है, बट गैस टरबाइन का जो चैम्बर है दैट इज नॉट, दैट कैनॉट बी मेड ऑफ सॉइल। So these all are thermal properties of material that decide what type of material you are going to use। ये गैस टरबाइन के जो एलॉय हैं वो निकल बेस्ड एलॉय होते हैं। On the other hand, you might require high strength material which are, on the other hand, which are flexible also। Flexible means bendable, easily bendable, जैसे वो स्पोर्ट्स में जो यूज हो रहा है। सो टेनिस रैकेट हैंडल और गोल्फ क्लब, उसमें जो यूज हो रहे हैं वो आर दीज मटेरियल which are different from the earlier two category of material। These material are zirconium, copper, nickel, aluminium alloy। यानी इसमें जिरकोनियम भी है, कॉपर भी है, निकल भी, एल्यूमिनियम भी है। चारों मटेरियल को इंजीनियर किया, कॉम्बिनेशन बनाया गया, कितना किसका क्या परसेंटेज होगा, that percentage is decided by a material scientist।
depending upon the output that we desire. So इस मटेरियल का भी स्ट्रेंथ देखो 2 GPa है, गीगा पास्कल. P इसमें कैपिटल होना चाहिए, सॉरी. So like the steel, पर टेनिस रैकेट का हैंडल हम स्टील का नहीं बनाते हैं. स्टील का बनाएंगे तो इतना हेवी हो जाएगा कि यू कैनॉट हैंडल दैट. So these are some of the examples, just to excite you. These are some of the examples जो हम यूज करते हैं, जो which are under consideration. मैं एक वीडियो दिखाऊं आपको, टाइम भी होने वाला है. Golfers use different types of clubs for different types of shots. Woods for long distance shots off a tee. ये बताओ, is it audible? We cannot see. Sorry? It is not visible. It is not visible. It is not visible. बट आवाज जा रही है. हाँ. Yes, sir. अच्छा, मुझको, मैं जो अभी इसको शेयर नहीं किया ना मैंने. Putters to gently roll the ball into the cup. Wait a minute, मुझको शेयर करना पड़ेगा. So what I was showing, I have to slideshow sharing, and then I have to share. So screen share कर लेता हूँ और तब मैं वो वीडियो करता हूँ. Golfers use different types of clubs. Abhi? Yes, sir. Visible. Yes, sir. You can see video also and you can listen audio also, right? Yes, sir. Both. For different types of shots. Woods for long distance shots off a tee. Putters to gently roll the ball into the cup. And irons for everything in between. That's why in golf, choosing the right club for the shot is a key part of the game strategy. The heads of these golf clubs are made from aerospace-grade stainless steel. To produce them, the factory begins with a wax replica of the club head. To make this wax pattern, as it's called, they inject hot wax into a mold. They extract the pattern and snip off the bulk of the excess wax. Using hot wax as an adhesive, a robot joins several patterns to other wax parts in the shape of gates and runners, the term for the channels that guide molten metal into the casting mold. Then the robot dips these patterns into liquid ceramic material 4 times, with a shower of silica sand in between each coat. The ceramic and sand harden, forming a shell around the wax patterns. Then the factory melts out the wax. The shell is now a mold with which to cast the metal club heads. On the casting floor, a furnace heats steel bars to 1635 degrees Celsius, well beyond the melting point. Meanwhile, another furnace heats the molds to 980 degrees Celsius. This burns out any remaining wax. It also fires the ceramic, making it strong enough to withstand molten metal. The pouring technique is critical. The metal must flow at a consistent rate to prevent the formation of air bubbles. After 5 hours, a pneumatic hammer breaks apart the mold. Workers saw off the gates and runners, separating the club heads. Then they grind off the last remnants of the gates and runners. A turntable runs the club heads through a sandblaster, which gives the metal a particular finish. Next, they stick on a metal badge bearing the club's model name. They apply a dot of automotive paint. The color identifies the angle of the club. There are 12 different angles. Now they line the neck of the club head with epoxy. Then coat the end of the shaft with epoxy and slip it into the neck.
A pneumatic hammer pushes the shaft in as far as it can go. The shaft is made of either extruded steel or carbon fiber. Now it's time to work on the shaft. First, they cut it to the right length, depending on the model. Then they put the shaft on a spindle and wrap the top 25 centimeters in double-sided tape to hold the club's rubber grip. They lubricate the tape and the inside of the grip before sliding the grip over the shaft. A laser line helps them align the grip in the right position. This is critical because the grip is the golfer's guide to correct hand positioning, which is essential to a good swing. Next, a computer reads the lie, the term for the club head's angle relative to the ground. Then it reads the loft, the term for the angle of the club head's face. The computer then tells the technician what adjustments to make. Once he's made the adjustments, the computer reanalyzes the new loft and lie to ensure they're perfect. Finally, the golf club goes for a weigh-in. The scale shows that this club needs another 18 grams to bring it up to spec. So they affix an 18-gram weight made of thermoplastic and metal. Actually, it weighs slightly less than 18 grams because they factor in the weight of the epoxy glue. It's this type of precision that ensures these golf clubs fit the quality specifications to a T. So, okay, did you watch this carefully? Yes, sir. Okay, so this 4 or 4.5-minute video has given you many new information how these golf clubs are made. Look at the precision, look at the material selection, look at the design, look at every parameter which are taken care of very precisely while making these clubs. However, let us focus on the material itself. And this is one example that I used in the last slide of why golf clubs require a particular type of material which are different alloy than how aeroplane wings are made, or which material aeroplane wings are made of. Now let us spend 5 minutes. It is 11:30. इसके बाद तुम लोग का क्लास है? Yes, sir. Yes, sir. कितने बजे? Which time? At 12 o'clock, sir. 12 o'clock. 12 o'clock. 5 मिनट हम लोग इस पे स्लाइड पे लगाते हैं, उसके बाद छोड़ दूंगा. Okay? So let us spend 5 minutes on these two topics. So display technology. I want it to make it relevant to you, to make you understand why this course is important for you. And therefore, I picked up these two particular examples for you to understand while discussing on these. One is display technology. Suppose you get a job in Samsung. Samsung is a company known for, these days, is known for mobile phone, known for many home appliances, including TVs. राइट, सैमसंग की टीवी हम यूज करते हैं, सैमसंग का मोबाइल फोन हम यूज करते हैं, सैमसंग का फ्रिज हम यूज करते हैं, सैमसंग के और भी बहुत सारे होम अप्लायंसेस हम यूज करते हैं. बट मोस्टली वी नो सैमसंग बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन एंड टीवी. ठीक, टीवी हैव वन, टीवी तो कंप्लीटली डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का ही प्रोडक्ट है.
अब टीवी में हम लोगों ने कंप्यूटेशनल फैसिलिटी भी ऐड करना शुरू किया है, सो यू कैन कनेक्ट इट विथ योर वाईफाई एंड यू कैन डू मेनी थिंग्स ऑन टीवी आल्सो, यू कैन send receive emails through TV, so there are many things, but basically TV is for display. You watch something on TV, and therefore your screen size as well as the technology of display should be as latest as possible. अब ये जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल डू यू नो इज यूज्ड फॉर दिस? दिखता है मुझको सामने तो ग्लास है, राइट, बट जस्ट बिहाइंड द ग्लास स्क्रीन व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें किस तरीके का मटेरियल हम यूज करते हैं? एनीबडी? बताओ। टीवी का जो स्क्रीन है या आपके लैपटॉप का जो स्क्रीन है, आपके डेस्कटॉप का जो स्क्रीन है, आपके मोबाइल फोन का जो स्क्रीन है, वो क्या है? बोलो। You are talking about LCD or LED? Correct. Correct. So when you go to a Samsung shop to buy a TV, तो वो जो मार्केटिंग नहीं, वो जो वहाँ का सेल्स पर्सन है, वो तुमको बोलता है कि साहब ये LCD है, इसका ये रिजोल्यूशन है, ये LED टीवी है, इसका ये रिजोल्यूशन है. He will also, or he or she will also show you, look, that is a plasma TV, look, that is a high definition HD, that is a QD. इस तरह की चीज बताता होगा. So what is that LCD or LED or plasma or QD technology that goes into the display, which makes the display more and more soothing, more and more exciting, more and more amazing. वो बिल्कुल आपको सामने दिखा देता है कि देखिए साहब, ये लोअर प्राइस का LCD टेक्नोलॉजी है, ये प्लाज्मा है, ये QD है, ये LED है. ये देखिए चारों में किस किस तरीके से आपको सेम इमेज दिखाई दे रहा है. And you feel excited, you feel great while comparing the feeling or resolution or the impact of those images, or you can make out कि प्लाज्मा टीवी आपको बेस्ट रिजोल्यूशन दे रहा है, QD in compared to that QD is also close but not that good. LED, LCD ये सब, so तुम देख सकते हो वहां पे. So when you say कि भाई प्लाज्मा वाला बेस्ट है, what is the price? Then on the basis of price you finally come to LED TV कि नहीं ठीक है, फिर value for money I would like to buy this LED. तब वो तुमसे नेगोशिएट करेगा कि साहब QD is the latest technology, ये इसमें आपको इतना हम गारंटी वारंटी देंगे, प्राइस थोड़ा जाता है बट इसमें ये एडवांटेजेज हैं, कुछ कुछ वो आपको फिर द सेल्स पर्सन डज हिज और हर जॉब. But that LCD or LED or QD or plasma are the choices of material, जिसकी बात हम लोग करेंगे इस कोर्स में. Coming to communication technology, Qualcomm शायद आप लोगों को इंटर्नशिप ऑफर करती है, बहुतों को किया भी होगा. नहीं, अभी आप लोग सेकेंड ईयर. हाँ, तो सेकेंड ईयर वालों को तो इंटर्नशिप के लिए हम ऑफर करते हैं या नहीं करते हैं? डज प्लेसमेंट कमिटी कम टू यू कि ये कंपनीज आई हैं प्लेस इंटर्नशिप ऑफर करने के लिए? सर अभी टाइम है, मतलब आफ्टर दिस सेमेस्टर. आफ्टर दिस सेमेस्टर
या हाँ, 4th सेमेस्टर के बाद आपको इंटर्नशिप के लिए जाना है, सो कंपनीज तो अभी ले जाती, आपको फाइनल नहीं सर, करती है ना। आफ्टर दिस सेमेस्टर देयर विल बी इंटर्नशिप। ओके ओके, सो Qualcomm कम्स फॉर इंटर्नशिप, ऑफरिंग इंटर्नशिप। Qualcomm आपको अर्ली स्टेज पे ही ले जाती है, इंटर्नशिप ऑफर करती है, फिर वो आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर करती है, फिर आपको बीटीपी के लिए ले जाती है, एंड देन फाइनली आफ्टर 2 years ऑफ ग्राइंडिंग दे सेलेक्ट यू और दे ऑफर यू फाइनल जॉब। Qualcomm is a communication company, communication technology company। ठीक है, उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी बहुत होता है, इसलिए सॉफ्टवेयर के भी लड़के या आईटी स्पेशलाइजेशन के भी बच्चे उसमें जाते हैं, बट प्राइमरली Qualcomm इज अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें सपोज यू हैव ज्वाइंड Qualcomm एंड यू आर लीडिंग अ टीम जिसका काम दिया गया कि आपको ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए आपको एक नया प्रोडक्ट बनाना है, बिकॉज वी आर कंपीटिंग विथ लेट अस से MediaTek। चलो MediaTek, तो क्या करोगे? अनलेस यू आर अ मटेरियल स्पेशलिस्ट यू कैनॉट लीड दैट टीम। सबसे पहला जो आपको, देखो सारा कुछ आप सॉफ्टवेयर के थ्रू अचीव नहीं कर सकते हो। सो अल्टीमेटली इन प्रोडक्ट डिजाइन something can be achieved through software, something can be achieved through hardware or material, and a proper or optimized balance between software and hardware will give you the best competitive product in the market. So सबसे पहले आपको मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ेगा। जितने भी डिफेंस रिलेटेड डिवाइसेस हैं, वो सब के सब सबसे पहले वो मटेरियल, उनका हाई स्पीड मटेरियल का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। क्योंकि वो माइक्रोवेव पे काम करना है, माइक्रोवेव के कॉम्पैटिबल जो मटेरियल होगा वही आपको पिक करना पड़ेगा, बिकॉज द बैंडविड्थ दैट इज गिवन फॉर डिफेंस is a separate bandwidth. That bandwidth is not available for commercial use. That you should be knowing or you might be knowing perhaps. So जो बैंडविड्थ हमारे पास होता है कम्युनिकेशन के लिए, उसमें गवर्नमेंट डिफेंस के लिए एक पर्टिकुलर चंक ऑफ बैंडविड्थ सेपरेट कर लेती है। उसके बाद जो बचता है वो बैंडविड्थ वो कमर्शियल कंपनीज को, मोबाइल कंपनीज को ऑफर करती है, सच एज जियो हुआ या एयरटेल हुआ या वोडाफोन हुआ या जो भी और कंपनीज हैं, उनको फिर ऑफर किया जाता है। फिर उसका ऑक्शन होता है कि कौन सा पर्टिकुलर बैंडविड्थ या बैंडविड्थ का कौन सा पर्टिकुलर पार्ट और स्लाइस will be given to Jio, will be given to Samsung, will be given to Airtel, will be given to जो बाहर की कंपनीज के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं के कंटेक्स्ट में भी वही है। Once that bandwidth is given to you, then the first thing that a communication technologist has to decide is the material, कि which material will perform best for that bandwidth. आप अपने डिवाइस को ग्रो करोगे, बनाओगे, डिजाइन करोगे। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए कौन सी जमीन, कौन सा प्लॉट इज बेस्ट, वो हम डिसाइड करते हैं ना, कि भाई मेट्रो के पास से होना चाहिए, हाईवे के पास से होना चाहिए, या किसी एक बढ़िया हिल स्टेशन पे होना चाहिए, सिक्लूडेड प्लेस में होना चाहिए, क्वाइट प्लेस में होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ द ओनर। द डेवलपर डिसाइड्स और सजेस्ट्स। ऐसे ही कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एज एन इंजीनियर यू हैव टू सजेस्ट योर कंपनी दैट दिस मटेरियल इज द बेस्ट मटेरियल फॉर यू फॉर द गिवन
slice of the spectrum that you have earned in auction. And there comes the role of engineering. That how within that material itself you can find out various combination or various properties. You can play with that, you can manipulate that. So that manipulation of property is actually engineering with the material that we are going to study in this course. So that is all for today's class. I am repeating these two slides just to make you understand that we cannot beat nature. Nature is the best material engineer. बट हम क्या करते हैं, इफ वी आर गुड एट ऑब्जर्वेशन, हम वो देख के सीखते हैं और उसको मिमिक करने की कोशिश करते हैं, और मिमिक करके हम बहुत कुछ नए बनाते हैं. That process of making something novel or new is going to be covered in engineered materials course. I hope I have made a pitch. So from next semester मैं इससे शुरू करूंगा, इस वीडियो से मैं शुरू करूंगा. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल गो ऑन स्लाइटली हायर पेस पे. तो मैं कभी नहीं जा पाता हूं, बट वी विल कम टू द मेन टॉपिक, और वी विल पिक सम टॉपिक जिस पे हम अगला 4-5 क्लास देखेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.